तो हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियोस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला देश। वो कौन सा देश है ये बताएंगे हमको रूही सेंट, जो कि यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और ये अपना ओपिनियन खुद से देंगे। तो हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आराम से बैठ जाइए और देखना शुरू कर दीजिए। Santa Cruz del Islote has an area of just 1% of a square kilometer in size, where 816 people squeeze their entire 816 lives. लोग The island is so एक full साथ that a अपना guide पूरा does his जीवन daily बिताते हैं। workout routine near a dog feces, and chaotic life here ओ creates सिर्फ new कुत्ते के मल के पास एक आदमी adaptations. एक्सरसाइज कर रहा We've है। been constantly encountering people no matter where we turn. People come out from every corner. It's impossible to be alone on these crowded मतलब जहाँ से भी ये जा रहे हैं, हर जगह से लोग आ जा रहे हैं। together in tiny rooms. How many people? ओ माय गॉड, छोटे छोटे कमरे में एक से ज्यादा दर्जन। ओ माय गॉड, इतना छोटा कमरा में 10 लोग रहते हैं। But these people have a much bigger problem than these houses, which makes life so extremely terrible here. Welcome to the most densely populated island on Earth. A 2-hour boat ride away from the mainland of Colombia, the island is just a little bigger than a football field in size and has a density of 68,000 एक people फुटबॉल per फील्ड square से बस kilometer. थोड़ी Even ही in बड़ी Hong है। Kong, known as one of the most 68,000 लोग रहते densely हैं। populated cities in the world, this rate is 6,749. There are only 4 दुनिया के streets and the सबसे ज्यादा place is आबादी वाले entirely देश से भी constructed ज्यादा by यहाँ पे people. लोग We रहते don't हैं। have cars or ओह, motorcycles here. We feel the density. यहाँ पे as किसी soon के as we पास step कार या onto the मोटरसाइकिल island. नहीं The है। sounds of people, roasters, waves, and music all mixed together. The homes here tell the story of the island. Let's get inside one now. Can we see inside your घर house? के अंदर चल। Yes, you may. See, I don't have anything. Sorry. इनके it's घर को dark देखने वाले हैं ये outside. लोग। We don't have electricity here. You can see that they have some यहाँ पे laundry बिजली work भी in the नहीं है। hallway, and they leave them to dry in this open area. Let's start with this Oh room. my God. Homeowner says 10 people share these 3 beds together. This is my ओ room. माय गॉड, How many people sleep on that bed? 3. What about एक this बिस्तर room? पे 3 लोग। She is not allowing us to enter this room as it's too unorganized. Kids used to sleep हो, here. Since उस it is कमरे में too जाने hot, नहीं दी we क्योंकि take उस mattresses कमरे का out of हाल the बहुत room बेहाल because हो there है। is no electricity. ओ शिट, यहाँ पे लाइट की Step व्यवस्था living भी in this नहीं room है। alone. They're making use of every bit of space, even the walls, because they don't own a wardrobe. 7 Their बच्चे clothes, एक रूम में shoes अकेले। are all over the place. The kitchen is far from being clean because of the water shortage. People use Oh water my only God. for drinking. किचन All इतना other गंदा reasons सिर्फ have इसलिए to क्योंकि be यहाँ पे पानी की व्यवस्था disregarded. बिल्कुल भी Almost नहीं any time है। on the streets we see laundry hung up or just left lying around. Some barbers at work. Chairs spilling out of homes. Children constantly running up and down. 220 families live in houses illegally built. Here, 220 फैमिली रहती है। any authority, and no one is officially a यहाँ पे landlord. कोई भी इजाजत नहीं ली जाती है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ चाहे लोग वहाँ अपना घर भी बना सकते हैं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। Sometimes they have to walk through each other's homes to get to the other side. As we get to अच्छा, know islanders बिल्डिंग more, ऐसे we will क्लोज है ना discover कि a मतलब very दूसरे के different घर में जाने reason से why दूसरे के their घर में future is जा going to get करके even दूसरे के घर में जा worse. सकते Population हैं। density defies all logic. We see dishes and leftovers everywhere, and this dog is trying to eat the यहाँ पे crumbs हर left on the जगह street. बचा Some हुआ people खाना are फेंका fishing, हुआ है। others selling food on street कुछ लोग corners, मछली and पकड़ some रहे हैं। working on construction. ओह, A कुछ few लोग are बाहर trying में their खाना luck बेच with a रहे हैं। lottery machine brought to the island, dreaming of becoming rich. As this all happens, ओ माय गॉड, there's a लॉटरी birthday मशीन से ये celebration, लोग and the अपना party sounds किस्मत can be आजमा heard रहे हैं। मतलब everywhere. वो जो लॉटरी मशीन नहीं होती, वहाँ से वो People are पैसे वैसे striving for कमाए comfort जाते in हैं। their little space. Is this her own house or is she on a rent? My own house. What is the average rent here? इसका अपना घर There है। are some who pay rent because there are people who are not from here. They pay $50 to $75. Usually, the $50 से only $75 utility they का pay for is भुगतान करते हैं। electricity. There is a crowded family here. They gave the second floor to their married children so that they can stay there. It seems they have a communal life. शादीशुदा here. बच्चों For को you to दूसरा have a फ्लोर better दिया है और इस घर understanding में of बहुत how सारे small लोग this रहते हैं। island really is, I came to the furthest side of it. ये पहले छोर पे आए हैं और टाइमर स्टार्ट करके And while दूसरे doing छोर that, पे I जाएंगे found और a timer. देखेंगे ये Let's कि see how कितने many मिनट minutes it लगते will हैं take. एक छोर से दूसरे We're छोर trying पे to find जाने। our way among the maze-like मतलब narrow एक छोर से streets, दूसरे trying छोर to में see जाने if में it's कितना possible, टाइम because लगता with है। every step we टाइमर pass शुरू through कर दिया और ये someone's चलना life. शुरू कर Kids दिए। अब dominate this देखते हैं island's कितने देर में ये population. Even a पहुंचते space हैं। of 4 or 5 steps turns into a vast playground in the आइलैंड में imagination सिर्फ of एक these स्कूल है, children. एक चर्च है, Island has one school, one एक church, 3 one मार्केट भी clinic, है। one hotel, one restaurant, and 3 markets. 200 years ago, none of these streets, this chaos, garbage, mosquitoes, and the people were here. According to a legend, some fishermen discovered this island and spent the night here when it was too late to return. Then they decided to settle here with their families after sleeping well without mosquitoes. It was later artificially enlarged by compressing coral rocks, seashells, Oh and my waste God. year after year. 2 मिनट से भी कम समय लगा इनको
इस सोर्स से उस छोर में जाने में मतलब कितना छोटा समझ सकते हो। She never left, not even a single day. Fishermen first came from the Baru region. They started to expand the island, and in 100 years, the island became like this. There were no Oh my motors God, back then or anything like इस that. आइलैंड की शुरुआत कब हुई थी? मतलब कुछ फिशर जो है फिश पकड़ने के लिए गए थे, उनको काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए यहीं पे इस आइलैंड पे रुकने का वो प्रोग्राम बनाया और यहीं पे रुके। और उसके बाद से यहाँ पे इनको अच्छा लगने लगा क्योंकि यहाँ पे मच्छर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और उसके बाद यहीं पे रहना शुरू कर दिए। बस इसीलिए इस आइलैंड में लोग बस गए हैं। Only small canoes with paddles. If you remember it correctly, when I was born, there was only this house and a few जब इनका more जन्म हुआ houses. तो यहाँ पे बस कुछ ही घर हुआ करते थे, लेकिन We are आप blessed to देखिए be कितना बड़ा located on घर। the world's second largest coral reef with its amazing sea life. Waves that rise 20 to 30 meters in the open ocean are reduced to merely 25 to 30 centimeters when they reach our shores. Look, all that you see around the island, up to 5 or 6 miles off the coast, is surrounded by pure कुएं और coral. We're कोरा safe से here. घेरा हुआ है। How many people live here? 2 families live here. यहाँ 2 Each परिवार family रहते consists हैं, of 6 members. यहाँ 12 12 people लोग in रहते total. हैं। Where is the kitchen? The kitchen. The stove goes here. That's not a problem. We cook with Oh my propane God, gas. Dogs can't किचन grow देखिए anymore कितना once they अच्छा है। hit a certain size because of not getting enough nutrition. Life here is really limited for every creature. Here we meet the nurse who has helped almost everyone Oh my come God, into ये the world nurse है। healthy. 40 years of delivering ओ अच्छा, ये babies. 40 साल से बच्चों की डिलीवरी का काम करती है। Oh my goodness, I've lost count. I मैं don't गिनना even छोड़ चुकी, remember. इन्होंने गिना भी नहीं Most है। of the youth in this town pass through these hands that you see. I delivered almost everyone on this island, and now I'm delivering even their children's ज्यादातर children. की डिलीवरी But I इन्होंने never की had और a उनके baby बच्चों की भी die. डिलीवरी Little उन्होंने children की। with vomiting, a high fever, or diarrhea come to me. सबको ये I ठीक tell them करती हैं what to क्योंकि ये do नर्स or हैं। which medicine to take. I'm like a doctor. Everyone knows me here. The lack of modern healthcare services on the island poses a risk in emergency situations. But as you will understand by the end of the video, their real problem is so much more vital. By the way, मतलब according to वीडियो the के अंदर locals, पता चलेगी the कि ये average life समस्या इनके लिए कुछ expectancy भी on नहीं the है, ये island बहुत is खुश है यहाँ। 85 to इनकी 90 समस्या years. कुछ और है। My sister died at the age of Oh my God. 103. People get to go beyond these limits only after they lose their lives because there is no cemetery on this island. यहाँ पे where कोई people can कब्रिस्तान bury नहीं है their क्योंकि loved यहाँ पे ones, as there is no कोई land to वो नहीं dig. है, जमीन After the नहीं corpses are है torn लोगों को around the दफनाने के square लिए, with इसलिए the यहाँ से बाहर ceremony, लिया they are जाता है। then जब कोई taken to the इंसान मर जाता है mainland तो by यहाँ से boat बाहर ले and जाया buried जाता है। there. What is the average age for girls to get married or have a child? Typically, girls are 16 years old when they have Oh my their God. first children. This also applies to their children when they get यहाँ पे married. लड़कियों की उम्र There is no 16 साल family की उम्र में planning and the शादी कर दी population जाती keeps है। growing rapidly. How many kids do people usually have? Here, 5 from मतलब 2 to आमतौर 5. पर यहाँ पे Family life here एक is जो unique फैमिली and होती है laid उसके back. 2 या Most of the 5 couples बच्चे are होते हैं। together without any official marriages. Also, it's not unusual for people to have kids with more than Oh my one God, partner. but यहाँ पे that's part एक of से life ज्यादा here. लोगों Is she के married? साथ मतलब एक से ज्यादा। I'm not married. Oh, really? Which means it's all free union. Oh. Free. Also, यहाँ पे लोग आजाद है, मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ डेटिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ ये लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे लड़कियां कह रही है कि मैं आजाद also हूँ। people don't care about their personal space and joke around all the time. One of the biggest problems of the island is कचरा। trash. Some of यहाँ these will पे be in the सबसे ocean, ज्यादा some समस्या of these कचरा will be है। sent to the mainland. But you can feel the smell and the amount Oh my of God. mosquitoes wherever you go. Is it filming? Most of the waste is hidden in ज्यादातर the कचरे को ocean. समुद्र Without में thinking फेंक दिया twice, जाता people है। just throw their loads of garbage into the water, which they Oh my see God. as a dumping ground. Plastics, glass, आप देख and metal सकते हैं यहाँ पे pieces. कितने But what you हैं। will see next will make you feel more disgusting. Oh, Unbelievably, shit. even a toilet can be found at the ocean floor. The crabs swimming in this pollution are some of the important Oh, food sources for केकड़े, the यहाँ के residents. लोग खाते हैं And these केकड़े। broken cages were used to hunt these animals. There are some plastic bags in the ocean. People are fishing. These women are washing their clothes. Life is chaotic here. Access to electricity and drinking water here varies depending on the weather बिजली conditions. और पानी, Solar panels are पानी here. यहाँ पे This मिलना is the बहुत way they मुश्किल है। produce electricity for the island. we have 380 solar panels and 180 batteries, which gives us energy for everything. If the weather is sunny, electricity is provided between 12 a.m. to 5 p.m. Is there something that she wants to change in this island? Mainly the electricity. Look, today we've been without electricity. बिजली के बिना for 4 days. 4 दिन से इन्होंने बिजली नहीं देखा है। You see tomatoes and peppers. Since there isn't enough power, these are not very fresh. These power पावर generators are जनरेटर working. यहाँ काम कर रहा है। Almost everything people need is provided in the 3 markets on this main street, यहाँ पे 3 including markets हैं। medicines. This is the trading center of the island. There's another shop here. You can buy some t-shirts and shorts.
We have a यहाँ lot of हवा wind बहुत here. ज्यादा है, The salt carried by winds damages जिससे our कि devices. मतलब बहुत ज्यादा हवा तेज के कारण इनको दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ती है। As there is no tap water in here, as you see, they gather the rainwater with these pipes. Not even a single drop of water is wasted. मतलब बारिश के पानी को ये लोग इकट्ठा करते हैं, पानी का जो There, below the health center, we have a community tank that we call the lung of the island. When it rains, the joy is so immense here that we go partying. यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो ये लोग बहुत खुशी मनाते हैं। It takes 7 to 8 months to get some rain here. We store that precious liquid and then we distribute it to all the families equally without skipping anyone. The Navy sees the problem we have here. They let the mayor's office use their ships so that they could bring us some water. ये पानी जब बारिश होती है तो ये लोग इकट्ठा करते हैं और फिर अपने फैमिलीज में बांटते The हैं। island doesn't have any sewage system. Even though rain means good news in terms of water supply, rainfalls are bringing life into the edge of a chaos. Since the enlarged areas of the island are not solid, hurricanes or a heavy rain makes houses and streets ज्यादा बारिश होने की वजह से इनके घरों में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। The only bad thing is the rainy season. When it rains, the tides rises. All these streets are flooded with seawater. More in September and October. During those months, if these houses didn't have these. अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो घरों में घुस जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उनके घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। We are at the heart of Santa Cruz del Islote. This is the only monument on the island, and it is called La Patrona. Monument protects us Monuments from इन्हें hurricanes. तूफानों से We are बचाते हैं। inside the small church of ये this चर्च settlement. है। It seems like it needs some repairing. Are you the priest? ये लीडर I am the हैं। leader. There are many young kids on this island. What will their future be like? After they finish primary school, they वो don't सिर्फ go on to further प्राइमरी studies स्कूल के बाद ये लोग हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। इट मीन्स कि इनका फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ के किड्स जो है उनके फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Welcome to the oldest school on the island. This is a classroom for ये the grade 1 Since बच्चों there is के no क्लास school in है। the neighboring islands, students from there also come here, and their school service is of course a boat. Every young boy here loves यहाँ के playing सारे soccer, बच्चों को even the girls. मतलब लड़का हो या लड़की हो सबको What do you फुटबॉल want to खेलना become पसंद। when you grow up? A soccer player. Where do they want to play? मैड्रिड टीम के लिए खेलना चाहते हैं, पेरिस टीम के लिए, Paris team. अर्जेंटीना की टीम से खेलना चाहते हैं। ओह माय गॉड। Locals are earning their living by tourism. Qualified as a national park, the island charges $2.5 from the tourists for the entrance. With the arrival of these मतलब यहाँ पे hundreds of टूरिस्ट tourists जो every आते हैं day, ना a much तो bigger उनके वजह chaos से ये लोग थोड़ा appears on बहुत the अर्न कर streets. पाते हैं। For us, tourists are a blessing from God. They are a source of employment, directly or indirectly. I'm a bartender. What is the average salary or profit for a person here? It depends very much on the season. मौसम पर There's निर्भर a guy who करते goes हैं। diving. If he's lucky, he can make $30 per day. If there are a few tourists, he can only earn $15. मतलब ये लोग टूरिस्ट जो आते हैं ना, क्योंकि ये टूरिस्ट जो आते हैं उन लोग के वजह से ये लोग की थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। $50 से लेके $100 अगर अच्छा मौसम है तो। Aquarium built for tourists where locals keep fishes, sea turtles, and even sharks in a very limited space. Famous for allowing tourists to swim with these animals, this place significantly contributes to the local economy. मतलब ये जानवरों के Fishing वजह is से very यहाँ पे important as well, but the people don't really value what the environment provides for themselves. The islanders now have to import fish because of marine pollution and overfishing. When you go out fishing, you no longer catch the same amount of fish. That is to say, right now, the fish in the restaurants is brought here from the mainland. Those who feed roosters are also keen on जो लोग मुर्गों को Every खाना Saturday, खिलाते हैं some वो islanders मतलब यहाँ bet पे their money मुर्गों on को these events लड़वाया for जाता है, fun. मतलब कुश्ती This is करवाया the जाता only है। hostel of Santa Cruz del Islote. Let's go inside. A peaceful atmosphere is created for the tourists here. टूरिस्ट It के looks लिए like एक a माहौल silent बनाया shelter गया है in जहाँ पे chaos. टूरिस्ट लोग आए Despite this crowd, और there यहाँ is पे not रह even a सके। single police that provides security nor a state of law on the island. Since everybody knows each other here, they don't need for it. Look, we have यहाँ पे कोई भी पुलिस कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को सारे लोग जानते हैं और दूसरे के लिए खड़े Our रहते police हैं। here are older adults. We respect यहाँ them के so much. बुजुर्ग इनके If there is an argument, मतलब यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं misunderstanding or ये a इन fight, लोगों के the पुलिस older हैं। adults जब भी sit कोई in the लड़ाई office, होती है find out तो who's right, बुजुर्ग जो and है give वो us आते advice. हैं और Then तय करते हैं we कि shake कौन गलत hands है and कौन keep सही on है। being the same brothers and sisters Totally with no awesome. hard feelings. Does he have plans और to फिर migrate वही to डिसाइड करते हैं कि somewhere? कौन सही कौन गलत और फिर सब ठीक हो जाता Born and है। raised right here. I'm going to die right here. In the evening, residents are more active and everywhere is more शाम में यहाँ crowded पे since ज्यादा the भीड़ weather होती है cools क्योंकि off. सब लोग इकट्ठे होते हैं। When the sun goes down, the island gets सूरज completely ढलने के बाद dark यहाँ पे because there अंधेरे हो isn't जाते हैं। electricity at night. People use candles or ये flashlights लोग of अपने their मोबाइल mobile के phones, फ्लैश which are लाइट ऑन charged करते हैं या during फिर certain मोमबत्ती hours to जलाया brighten करते the हैं। night.
Everyone goes outside of their doorsteps because their houses are very tiny and dark. रात में ये लोग घर के बाहर बैठते हैं क्योंकि घर में बहुत ज्यादा अंधेरे होते हैं और बहुत ज्यादा छोटा भी है ना। अच्छा, यहाँ पे एक पब भी है छोटा सा जहाँ सब लोग जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं लोग। People are singing and dancing together. Some of them play domino, a very popular game here, and the birthday party चल रही है। Some of the garbage from this event is already piled up here. Most of these people living in isolation from the rest of the world have never left these boundaries in their entire life. They have no desire to leave their small world or to strive to improve their पूरी जिंदगी में ये लोग जो है इससे बाहर नहीं निकले हैं और इनको यहीं रहना है, यहीं पे पूरी जिंदगी ये लोग बिता चुके हैं। पॉजिटिव वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। साफ पानी की कमी और कचरे की सफाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। Despite all the negatives, people are connected to each other like a big family and are happy. Thank you for watching this documentary. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. मतलब ये लोग इतने छोटे से जगह में रहते हैं, इतने से छोटे से शहर में मतलब अपना पूरे दुनिया बना चुके हैं और फिर यहाँ पे बहुत कम लड़ाई झगड़े भी होते हैं और बहुत लोग यहाँ पे बहुत ही खुशी से रहते हैं। आई थिंक मुझे तो लगता है कि ऐसी जगह हर जगह पे होनी चाहिए कि छोटे से जगह में फैमिली की तरह रहें, कोई झगड़ा नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा है यहाँ पे कोई जाति वाति कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग यहाँ पे एकदम से इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे सारे लोग आज़ाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे नहीं कर सकते। मतलब ऑसम ऑसम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।